After the universality and definition and what is the difference, difficulty in universal definition of it, now we can go for the laws of the marriage. What are the laws which regulate the marriage and the social controlling with respect to the marriage, how it is done. So let's go and know about it. Please put the heading laws of LAWS, laws of marriage. See, after that you will also come across regulations of the marriage. See, simple laws, rules and regulations. Laws, rules and regulations. Simple variations होते हैं इसमें. Laws जो है mainly they are made by the legislature. Through that there is a standard procedure for making of the law, and there are some organs for lawmaking. Only they can make it. For example, in India, Parliament in the union level and state legislative assemblies at the local level, and some can be done by the executive through delegated legislation. But ये laws को implement करने के लिए जो rules regulations चाहिए, like say laws are needed for controlling, social controlling. अब लॉस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, these rules and regulations are developed or set by the executive, in this case the government or the bureaucracy. So executive rules and regulations को frame करते हैं, and they are mainly for implementation of the laws. This is the simple. अब इसमें भी देखो, after covering of laws of marriage we will also go for regulations of the marriage. तो वहां पर इन दोनों को इंटरलिंक करेंगे हम, ठीक है. First, let us look at the laws of the marriage. Mainly as per our syllabus, we have endogamy, exogamy, hypergamy, hypogamy and incest. These are the laws that we have. So let us cover them, then we will go to the next unit. So please write. Laws of the marriage control how a marriage institution is set, how a marriage institution is set up in a particular society, So the marriage institution is governed by a set of laws. So it varies from society to society, not necessarily same in all the locations. So please write, it can vary from society to society. Okay. Now, what are the laws that we will be looking at? So there are 5 of them. Number 1, okay, we will directly go into one by one. So number 1, endogamy. Put the subheading endogamy. See, endo means within, gamy means, gamous means marriage. So it's literally marriage. When the marriage happens within a group, that group may be religion based, caste based, creed based, language based, region based, whatever it may be. If there is a group and the marriage or the selection of the mate is restricted from within the group, such marriages we call them as endogamy or endogamous marriages. So here the law is to marry from within a particular group. That is what is endogamy. So please write, it is a law which prescribes that a person has to choose, has to choose his or her mate, मतलब partner, mate, M-A-T, mate, from a particular group only. So this is what is called endogamy. For example, it can be tribe related or clan related, or it can be gotra related,
or it can be GH4 tier, गोत्रा रिलेटेड, और इवन इट कैन बी कास्ट रिलेटेड. अब देखो सेम कास्ट मैरिजेस होते हैं, सो स्ट्रिक्टली बोलते हैं हमारा आउटसाइड के कास्ट पे हम शादी नहीं करेंगे. सो इट मींस दे आर फॉलोइंग स्ट्रिक्ट एंडोगैमी. ठीक है, सो दिस इज वन लॉ. नेक्स्ट सेकंड प्लीज राइट, एग्जांपल्स भी लिख लेना. सेकंड इज एक्सोगैमी. Say, what is the reason behind this practicing of the endogamy? Answer is simple: to maintain the purity of their culture or blood or their practices or rituals, whatever it is. कई जगह पे देखो, to maintain the purity of the caste, they would only go for the same caste marriages. Similarly, purity of the tribe or secrecy of the tribe, ये सारी चीजें and kinships bonds वगैरह increase करने के लिए भी they would go for endogamous marriages. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज पुट दिस अप हेडिंग एक्सोगैमी एंड प्लीज राइट, इट इज ए लॉ which prescribes, sorry guys, which prescribes that a person must choose his or her partner, मतलब spouse, from outside a particular group. मतलब यहां पर क्या है, अपना ग्रुप से शादी नहीं करना है. For example, strictly outside the group. So for example, a person who is belonging to clan 1 is not going to marry the clan 1 persons. They have to go for another clans. See here they believe that all of them are siblings. जैसे मैंने भी कुछ एक्सपीरियंसेस देखा था राजस्थान में. देयर इज वन विलेज वेयर आई यूज्ड टू गो फॉर दिवाली. तो वहां पर विद इन द विलेज ईच एंड एवरी वन दे बिलीव दैट दे आर सिबलिंग्स. सो अगर उनमें से किसी का भी शादी होना है, दे कैन नॉट मैरी फ्रॉम द सेम विलेज, दे हैव टू गेट देयर स्पाउस फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस. ठीक है, इस तरीके से कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं. And these are all to increase the wider alliances and cooperation वगैरह बढ़ाने के लिए, social bonds जो है, क्योंकि मैरिज के साथ फैमिली का जो लिंक्स है वो इंक्रीज हो जाता है. सो दैट इज द मेन रीजन दे वुड गो फॉर एक्सोगैमी. ठीक है, अंडरस्टूड. सो दिस इज द सेकेंड लॉ. नाउ थर्ड लॉ इज, प्लीज राइट, हाइपरगैमी. हाइपरगैमी. Tell me, what is hypergamy? Marriage a person which is belong to upper caste or upper status rather than himself. See, यहाँ पर ना दो तरीके का होता है. इसको लिटरली हम संस्कृत में या लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे, लोकल डायलेक्ट में इट मींस अनुलोमा. हाइपरगैमी, अनुलोमा. See, जब भी फर्स्ट अंडरस्टैंड सिंपल, देयर इज लाइक मेल पर्सन एंड फीमेल पर्सन. सी ये बात सिंपल रूल क्या है, व्हाट इज दिस लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अ ब्राइड, मतलब बेटे को लेकर आ रहे हो, तो उस टाइम पे क्या है, मतलब ए मेल पर्सन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ मेल पर्सन कैन मैरी अ वुमेन फ्रॉम द सेम सोशल स्टेटस और बिलो द सोशल स्टेटस ऑफ द मैन. ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, जो वुमेन लोअर सोशल स्टेटस से इनका स्टेटस तक मैरी हो रहा है तो उनका सोशल अपलिफ्टमेंट होगा. ठीक है, तो मेल पर्सन के लिए ये रूल है. वही अगर फीमेल पर्सन होता है हाइपरगैमी में, सो इफ ए फीमेल पर्सन इज टू बी गिवन इन मैरिज, सो कैसे दे सकते हो, either you can give it to the male person of the same status, social status, or to the upper status, मतलब अपर कास्ट जो होता है उनको देना होगा. दोनों साइड से देखो, मैरिंग ऑफ अ मैन टू द वुमेन देखना है, मतलब मैरिज से सिंपल. इस साइड से देखो, डॉटर साइड का देखो, ब्राइड साइड से,
ब्राइड को देना या लेना। देना है तो कहां पर देना होगा, अपर सोशल स्टेटस पे देना होगा, ताकि वुमेन का एंड हर चिल्ड्रंस का स्टेटस इंक्रीज होगा। अगर लेना है तो कहां से लेना है, इधर आपका इक्वल स्टेटस या नीचे वाला सोशल स्टेटस है। इस काइंड ऑफ रूल्स आर मेनली सीन इन हाईली स्ट्रैटिफाइड सोसाइटीज, ये बोलते हैं हाइपरगैमी। अब हाइपोगैमी क्या होता है, दिस इज अनदर रूल, हाइपो, HYPO, हाइपोगैमी। सो इट्स सिंपली नेगेशन ऑफ इट। ठीक है, नेगेशन का मतलब क्या है, व्हेन अ बॉय इज गोइंग फॉर द मैरिज, either he can get a girl from same social status or from high social status। जनरली ये कहां पर होता है, जहां पर मैट्रियार्चल सोसाइटी है। ठीक है, सो ऐसे जगह पे कोशिश करते हैं अपर सोशल स्टेटस वाला जो पोजीशन है वहां से शादी करें। ठीक है, एंड सिमिलरली फीमेल के लिए हाइपोगैमी में कैसे होता है रूल, either from the same social status or below her। ठीक है, जो बिलो सोशल स्टेटस है वहां से स्पाउस को सेलेक्ट करना। सो दिस इज व्हाट हाइपरगैमी एंड हाइपोगैमी। सो प्लीज राइट हाइपरगैमी। इसमें लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ए मैन or you can say a man can, when हटा दो, a man can marry from his own कास्ट बोल सकते हो या सोशल स्टेटस बोल सकते हो, जितना उसका बराबर। सो हिज ओन सोशल स्टेटस और फ्रॉम दोज बिलो हिज सोशल स्टेटस, ये हाइपरगैमी में बात कर रहे हैं, फ्रॉम दोज बिलो हिज सोशल स्टेटस। एंड वुमेन का कैसे होगा, अपोजिट होगा। सिमिलरली कंटिन्यू द सेम, सिमिलरली ए वुमेन कैन मैरी from her own social status or from the above, or from the above. See, the reason for this is to maintain the purity of their culture or whatever the practice. Second reason is to uplift particularly women, and this practice is more prevalent in the patriarchal माइंडसेट या पैट्रियार्कियल सोसाइटीज जो है वहां पर थोड़ा ज्यादा प्रेवलेंट होता है, वेयर पैट्री लोकैलिटी इज प्रेजेंट, वेयर द ब्राइड मूव्स टू ग्रूम्स हाउस आफ्टर द मैरिज। ओके, ऑन द अदर साइड हाइपरगोमी, प्लीज पुट दिस सबहेडिंग हाइपोगैमी। इसमें लिख लीजिए, इट इज ए लॉ, it is a law where a woman is married to same social status or below her status, below her status। Second, similarly, a man can marry a woman of same social status, woman of same social status or above, See, sometimes this leads to polyandrous marriages। बाद में देखेंगे what is polyandry, it means one no woman more husbands। ठीक है, यहाँ पर इस कंडीशन में हायर कास्ट का डिमांड ज्यादा बढ़ता है ना, इस वजह से। सिमिलरली दिस कुड लीड टू लाइक पॉलीगाइनी एंड नो डाउरी एंड अदर थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा स्पिंस्टरहुड, लाइक बहुत सारे लोग बिना मैरिज का भी रह जाते हैं, जस्ट सिंपली दे कांट अफोर्ड टू
like pay the amount of dowry or other things the as demanded by the superior caste groom family. ठीक है, ये दो अलग हैं. Next, one more law which governs it is, and very much universal one, is incest. So please put the subheading incest taboo. Incest taboo. See, earlier when we were studying the I think 9.5 racism and all, somewhere in the ninth unit we have seen genetic polymorphism. That's where we have seen consanguinity and incest. That is simple. Incest का मतलब क्या है? It means having sexual relations with the close relatives. Close relatives means same generation line हो सकता है या within one generation. For example, the sexual engagements between mother and son, father and daughter, brother and sister, ऐसे वाला जो है, these can be called as incest, and it is prohibited in almost all societies. Okay, so it's a universal prohibition, universal taboo. Now we will be trying to look at it, why this is universally existing, what are the theories that suggest how this has developed, that we will look at it. Okay, so please put the subheading incest taboo. Incest taboo. So please write. It is a prohibitory law, a prohibitory law governing और governing बोल सकते हो या prohibiting बेटर रहेगा, prohibiting लिख लीजिए, prohibiting sexual engagements between close relatives. एग्जाम्पल ये लिख लीजिएगा, मदर, सन, फादर, डॉटर, brother and sister. This is what is incest. ठीक है. Now it is universally seen. So please write, continue in the same. It is an universal law of marriage institution. Universal law of marriage institution, which can be seen in almost all societies. हर जगह पे दिखता है. Now, why it is present in all societies? What is the reason behind it? So many people try to understand it. Like, see, it is expected that some primitive societies जो मतलब modern civilization से ज़्यादा दूर पे होता है, जैसे in the remote forests of Amazon or in the mountainous regions of Rockies, Andes, ऐसे जो remote areas पे जो लोग हैं, उस पे ये expect करते हैं कि वहाँ पर sexual promiscuity होगा. Promiscuity मतलब ऐसे कोई prohibitory rules नहीं होगा. Each and everyone will be a kind of a maid, panmictic जैसे. So this kind of like कोई भी no prohibition for sexual engagements. But when we have explored and when we see, surprisingly, all of them have this incest taboo. So many anthropologists and many other people, other researchers, they were curious about how this incest started developing in all those societies and what is the reason behind it. Initially, how it could have come into picture. So that's where some scholars have also proposed some theories of explaining this. Let us have a look at it. So please write next. Continue in the same. Some scholars tried to explain the existence of incest
taboo in the following manner. इन द फॉलोइंग मैनर, इसमें सबसे फर्स्ट देखो इन ब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी. सो प्लीज पुट दिस सबहेडिंग इन ब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी. सी ये थ्योरी क्या कहता है, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन वी विल राइट. सी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी it says that initially people were promiscuous and they were going for like even incest, and then they found that it has certain bad effects of inbreeding. जैसे हमने consanguinity inbreeding में देखा था, it could lead to eruption of the recessive genes which are harmful in nature. So ये वाला नुकसान क्रिएट कर सकता है. So that's the reason why they purposefully avoid करने के लिए, इनब्रीडिंग को अवॉइड करने के लिए इंसेस्ट टैबू लेकर आया. तो seems logical, तो सही लग रहा है. But when we look at it, criticism ये है, see incest taboo has been in practice for many thousands of years. ठीक है, बट आपका इसके बारे में जो इन ब्रीडिंग के बारे में, जीन्स के बारे में आइडिया जो है वो तो 1900 में आया, अब तक आकर 150 लेट से 200 साल भी पूरा ठीक से नहीं हुआ है. तो अगर इतना जल्दी लाइक 200 साल भी पूरा नहीं हुआ है, देन हाउ द नॉलेज ऑफ this was present in those times when it was developed in the very earlier days, maybe 10,000 years ago, 20,000 years ago. तो वो साइंटिफिक डेटा कहाँ से आया था, कोई माइक्रोस्कोप वगैरह कुछ नहीं था, जीन्स के बारे में नहीं पता था. Even Gregor Mendel does not know about the genes. He was experimenting in 1865, but he did not know about the genes. He even called them as traits or factors. He called them as factors. So how come these people get to know? Criticism. तो criticism को avoid करने के लिए या आंसर करने के लिए कहता है it could be based on trial and error. Maybe they might have tried and saw some genetic defects in the babies. That's the reason why they might have put this prohibitory law. लेकिन ट्रायल एंड एरर बेसिस पे अगर ये कर रहा है तो व्हाई डिड नॉट दे कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर इंसेस्ट कंटिन्यू करते हैं तो वहां पर क्या होगा, सारे डिलीटेरियस जीन्स जो है वो खत्म हो जाता है, देन इट वोंट हैव द इम्पैक्ट. ठीक है, तो वो क्यों नहीं कंटिन्यू किया, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड है ट्रायल एंड एरर आप बता रहे हो, इज देयर एनी साइंटिफिक प्रूफ for this? Is there any empirical data? Answer is no. So those are the criticisms of it. Understood? So please write inbreeding avoidance theory. So please write according to it, incest prohibition or incest taboo developed or originated due to bad impacts of inbreeding. Bad impacts of inbreeding, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं ना, उसके वजह से. ठीक है, बट हाउएवर लाइक क्रिटिसिज्म क्या था इसका? क्रिटिसिज्म यही है, हाउ डिड द पीपल फ्रॉम like ancient knew about genetic impacts. ठीक है, दिस इज द क्रिटिसिज्म. तो इस क्रिटिसिज्म को जस्टिफाई करने के लिए क्या बोला है? ड्यू टू ट्रायल एंड एरर मेथड. तो अगर ट्रायल एंड एरर मेथड है तो इट कुड हैव बीन कंटिन्यूड, एंड ऊपर से ट्रायल एंड एरर मेथड का कोई साइंटिफिक प्रूफ जो है दैट इज आल्सो नॉट देयर. सो दैट्स वेयर दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड. ठीक है, इन ब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी. क्लियर? इसमें से कोई डाउट है बताइए. ओके, नेक्स्ट सेकेंड थ्योरी. So please write subheading
familiarity, avoidance, familiarity avoidance. See, what is the meaning of familiarity avoidance? See, जो बच्चे और जो पीपल बचपन से एक दूसरे को देखते आ रहे हैं ग्रोइंग टाइम पे, एंड दे मस्ट हैव सीन ईच अदर नेकेड इन द चाइल्डहुड इटसेल्फ, ऐसे बच्चे में सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है. देयर इज ए नेचुरल सेक्सुअल डिसइंटरेस्ट, दे डोंट एंगेज इन द सेक्स. सो दैट इज द रीजन वाई द फेमिलियरिटी. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो फैमिली में बच्चे को मतलब मदर फादर या ब्रदर सिस्टर जो सिबलिंग्स वगैरह होते हैं बचपन से एक दूसरे को नेकेडली देखते हैं और वो लोग एक साथ ग्रोइंग अप होता है. सो एज ए रिजल्ट ऑफ इट देयर इज नो सेक्सुअल इंटरेस्ट इन देम. सो दैट इज द रीजन वाई सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए इंसेस्ट टैबू लेकर आ गया, ये वाला बताता है. लेकिन इसका क्रिटिसिज्म देखो, अगर जो नेचुरली सेक्सुअल इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं हो रहा है उसके लिए व्हाई दे हैव टू मेक ए रूल एंड पुट इट एक्सप्लिसिटली. सी, रूल तो वहां पर चाहिए ना जहां पर मतलब कुछ चीज को आप रोकना चाहते हो जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है, उसको आदत कम करने के लिए. बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू यू द थियरी सेज दैट देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ अवॉइडेंस ऑफ द नो सेक्सुअल बिहेवियर बिटवीन दीज. सो इफ देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी, natural disinterest is there, then why there is a requirement for such making of the law? Okay, that was the criticism which can't be explained by it. So please write familiarity avoidance, sorry guys, familiarity avoidance theory, ये वाला लिख लीजिए. According to this theory, incest taboo is just formal prohibition for a natural ओवर्शन मतलब नॉट गेटिंग अट्रैक्टेड, ठीक है, ओवर्शन टू सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन people who have grown up together. इनके लिए ना वो एग्जाम्पल्स या प्रूफ्स क्या दिया था एग्जाम्पल में, एक तो कीबुड्स सोसाइटी दिया था, ठीक है, कीबुड्स, ठीक है. सी, कीबुड्स में क्या है, द चिल्ड्रन आर रेयर्ड इन द चाइल्ड केयर सेंटर्स. जैसे बताया था ना, मम्मा पापा जो है एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो अपना बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर्स में रख के ग्रोइंग अप करते हैं, तो दे कंट्रीब्यूट मनी एंड एवरीथिंग. नाउ द चिल्ड्रन हु आर ग्रोन अप इन वन पर्टिकुलर केयर, चाइल्ड केयर, लेट्स से ये चाइल्ड केयर 1 है, ये चाइल्ड केयर 2 है. चाइल्ड केयर 1 के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स हो सकते हैं, तो वहां पर जो है outside, like when they are grown up, they very like seldom there was no marriages between them, so there was no sexual interest between these guys, but they would have gone for some other. So ये वाला एक practical keywords of Israel जो है, children who are seen each other naked, they have no sexual interest in each other. Similarly ताइवान का टाइम पे, ताइवान में क्या है, एक प्रैक्टिस है, एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में एक प्रैक्टिस था. प्रैक्टिस ये है कि बचपन में ही मैरिज, शादी हो जाता है, चाइल्ड मैरिजेस, एंड द चाइल्ड लाइक द चाइल्ड ब्राइड इज बीन ब्रॉट टू द इन लॉज हाउस. तो वहां पर उनका हस्बैंड के साथ साथ उनको भी ग्रो अप करते हैं, तो दे ग्रो अप टुगेदर, द वाइफ एंड हस्बैंड, बोथ ऑफ देम टुगेदर. So why such practice? Like Taiwanese people used to believe that अगर child time period पे ही, if we bring the girl to the in-laws house and if we grow her here,
तो द कंपैटिबिलिटी ज्यादा अच्छे से रहेगा एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गर्ल विल बी मोर, ये वाला बिलीव के साथ उनको बचपन में लेकर आके अपना बेटी के जैसे ग्रो अप करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस किया था, ऐसे जगह पे जो मैरिज का स्टेबिलिटी वो कम था, क्योंकि बोथ दिस हस्बैंड एंड वाइफ बच्चे जो है बोथ ऑफ देम आर ग्रोइंग टुगेदर एंड दे डेवलप लेस सेक्सुअल इंटरेस्ट विद इन ईच अदर, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज्यादा हो रहा था एंड द मैरिज इज गेटिंग ब्रोकन। ठीक है, सो दिस इज अनदर एग्जांपल फॉर फेमिलियरिटी अवॉइडेंस के लिए। ठीक है, सो कीवर्ड्स यहां पर आप लिख सकते हो, चिल्ड्रन ग्रोन टुगेदर, कीबोर्ड्स एंड ताइवान सोसाइटी दोनों में चिल्ड्रन ग्रोन टुगेदर हैव लेस सेक्सुअल इंटरेस्ट। सेक्सुअल इंटरेस्ट नहीं था। दिस इज द सेकेंड theory. Is that clear? Now third theory, please write third theory. Heading is this is little bit valid theory, that is prevention of disruption of the family, or preventive disruption, ऐसे लिख लेते, preventive destruction or destruction of family. So what is this theory? According to this theory, incest क्यों आया था? See, according to this theory ये उल्टा बताता है, फेमिलियरिटी का उल्टा। जो बचपन एक साथ ग्रो अप होते हैं उनका एक दूसरे में सेक्सुअल इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं एंड दे compete फॉर देम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फादर एंड सन वुड compete फॉर सेक्सुअल राइट्स विद द मदर and the sister, and similarly the mother and the sister, the daughter, they would compete for sexual rights with the father and the brother, ठीक है, or son. So in such a cases there could be like a disruption of the family, they will fight over each other कि मुझे मतलब ये सेक्सुअल राइट्स के लिए फाइट करते हैं, जिसकी वजह से फैमिली टूट सकता है। सो फैमिली टूटने लगा, सो इट इज डिस्ट्रॉइंग द फैमिली, एंड इन ऑर्डर टू reduce or in order to prevent that, they have brought explicitly one law which is incest taboo, which is prohibiting sexual engagements between mother and son, and brother and sister, and father and daughter, and father and let's say ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, फादर एंड डॉटर एंड ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, ये वाला बताता है ये थ्योरी। ठीक है, सो प्लीज राइट फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, incest taboo arose to prevent any attempt to satisfy sexual needs within family, which could destroy the family. You can see even now in modern societies and all, एक बार children when they come to the age of 16 years or so, they are sent out of the house. They are sent and said you go and live on your own. ठीक है, but India का society थोड़ा अलग है। Here the family is like enduring from birth to the death. So इसमें देखो why the incest taboo came, in order to prevent any disruption of the family. So यहाँ पर family satisfies many needs. One of the needs is sexual needs also. So if they turn to satisfy the sexual needs within the family, that will destroy the family. That's the reason why such a law has been brought together. So इसका भी कुछ है, if it is so, then why in ancient time, ancient Egyptian civilization, why there were like brother sister marriages? See, ancient pharaohs वगैरह जो है, they used to follow this brother and sister marriages, जैसे क्लियोपाट्रा वगैरह
कई नाम वगैरह सुना होगा, इनका ब्रदर सिस्टर मैरिजेस होते थे। तो दिस इज अ क्रिटिसिज्म, बट एक्सप्लेनेशन इज दैट वो जो pharaohs वगैरह जो है इजिप्ट का, दे यूज्ड टू बिलीव दैट दे आर द इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, एंड अगर गॉड है, गॉड सिर्फ गॉड से ही शादी कर सकता है, और यहाँ पर pharaoh फैमिलीज के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए विद इन द फैमिली दे यूज्ड टू गो फॉर मैरिज। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग। सिमिलरली अगर यही बात है तो प्रिवेंटिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली, सो फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ और लॉस भी रख सकते थे। देन व्हाई ओनली दे हैव गॉन फॉर इंसेस्ट टैबू, दे कुड हैव पुट सम मैरिज रेगुलेशंस, मैरिज लॉस भी अलग से रख सकते थे। व्हाई स्पेसिफिकली इंसेस्ट को क्यों रोका है? सो दैट आंसर कुड नॉट बी गिवन बाय इट। Then there is final theory which explains the incest, that is wider alliance theory. Please put this up heading, wider alliance theory. So what is this wider alliance theory? According to this theory, initially जब मैरिज इंस्टीट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे ग्रुप्स जो था, सोसाइटीज जो है वो स्मॉल है, तो स्मॉलर द नंबर लेसर विल बी द प्रोटेक्शन। आपका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, मोर विल बी द प्रोटेक्शन। सो उस टाइम पे क्या था, हाउ व्हाट इज द वे ऑफ वाइडनिंग योर अलायंस, व्हाट इज द वे ऑफ लाइक नो एनहांसिंग योर नंबर्स? एक रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन काफी टाइम लेता है। दूसरा जो है इमीडिएटली आपका सोशल रिलेशंस और रिलेशंस का वेब बढ़ा देता है, दैट इज मैरिज। क्योंकि द मोमेंट मैरिज हैपेंस, होल लॉट ऑफ रिश्तेदार बन जाता है। ठीक है, सो दैट कुड बी द रीजन वाई अगर मैरिज करना है तो विद इन द फैमिली तो नहीं कर सकते, विद इन फैमिली करोगे तो उतना ही फैमिली रहेगा। तो इफ यू गो फॉर मैरिज आउटसाइड तो आपका फैमिली का साइज इंक्रीज होगा, रिलेशंस इंक्रीज होंगे, आपका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, अलायंसेस सब इंक्रीज होंगे। दैट कुड बी द रीजन व्हाई दे हैव पुट ए प्रोहिबिटरी लॉ फॉर इंसेस्ट एंड प्रमोटेड द आउटसाइड वाइडर अलायंसेस। ठीक है, सो प्लीज राइट, इसमें लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, incest taboo was placed to increase group cooperation among various groups through alliance. सी यहां पर ये थ्योरी क्या बता रहा है, इट इज सेइंग व्हाई, बट इट इज नॉट सेइंग हाउ। ओरिजिनेशन कैसे हुआ ये नहीं बता रहा है, दैट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी। And it also talks about like if it is so, why there is endogamy क्यों practice कर रहा है? अगर widal alliances is the main reason, then why each and every marriage rule should be exogamous, ताकि वो ग्रुप बढ़ते बढ़ते जाए और इंक्रीज होते जाए। But why strictly endogamy? If this is the sole reason, so again that criticism is there. But despite all these criticisms, like incest जो है, incest taboo, that is universally seen and almost all societies have certain rules and regulations, laws prohibiting this close kin sexual relations. That will be the bottom line. Okay, so लिख लीजिए, bottom पे लिख लीजिए। सी एक सिंपल ये बताता है, एक और रीजन है, ह्यूमंस का डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा होता है, लाइक इट वुड टेक 16 to 18 years of time for a human baby to mature and be independent. So इतना लंबा डिपेंडेंसी है, तो इसका मतलब है कि लंबा टाइम तक फैमिली शुड बी विथ यू। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंसी रेशियो इज मोर। सो इफ यू वांट योर फैमिली टू बी विथ यू, देन देयर शुड नॉट बी प्रिवेंशन ऑफ द, or you say destruction of the family. That is the another reason. And also to have more and more security, you could go on for like bigger alliances. ठीक है, ये वाला लिख लीजिएगा। सो लिखना क्या है बॉटम लाइन पे, कंक्लूजन के जैसे ये लिखेंगे, प्लीज राइट। इंसेस्ट टैबू
though not known how exactly it came into being, not known how exactly it came into being, or when it came into existence, or when it came into existence, but it is an universal, marriage law. ठीक है, इट इज एन यूनिवर्सल मैरिज लॉ. ठीक है, तो इसके साथ हमारा डेफिनेशन यूनिवर्सलिटी, लॉस ऑफ द मैरिज में एंडोगैमी, एक्सोगैमी एंड हाइपरगैमी, हाइपोगैमी, इंसेस्ट, ये सब खत्म है.